नमस्कार, गुड इवनिंग एंड सभी को वेलकमेन हमारे साथ हमारे आज के जो की स्पीकर हैं डॉक्टर अनिरुद्ध गुरुप्रताप सिंह जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके संपर्क में आई और वो हमारे साथ हैं और अपना ज्ञान का प्रसार करने के लिए हम उपस्थित हैं। अनिरुद्ध जी का हार्दिक स्वागत है। A warm welcome, Aniruddh ji, and please, yeah, जी, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। और दीपा जी, आप नॉर्वे से जो है इंडियन रूट्स को आगे लेके चल रही हैं और जिस प्रकार आपकी एक प्रबल इच्छा योगा को सीखने के लिए, उसको जानने के लिए और सबको जो है उसकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज बांटने में जो आप कर्मठता दिखा रही हैं, उससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपको जो एक ट्रेडिशनल ज्ञान है, जो हमारे योग के जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो शेयर हो पाई मृत्युंजय योगपीठ से। मृत्युंजय योगपीठ एक एक ऐसा एक एक बगीचा है, जिसको एक गार्डन है, जिसकी स्थापना जो है वो प्रेरणा मेरे गुरु श्री मस्तराम बाबा जी के माध्यम से हुई और मेरे माता पिता ने उसको साकार किया और इसको ने आगे बढ़ाया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके समक्ष मैं इस अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल कर रहा हूँ दीपा जी के माध्यम से। और दीपा जी की एक बहुत एक मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड नो हाउ दिस सूर्य नमस्कार एक थॉट केम। तो दीपा जी ने प्रण लिया 365 दिन सूर्य नमस्कार डेली प्रैक्टिस करने का, और ये एक अद्भुत प्रण है जो कि हम जैसे जप माला 108 मनकों की होती है, उसी प्रकार जो ये 12 सीक्वेंसेस, ट्रेडिशनल सीक्वेंसेस हैं, उनकी डेली प्रैक्टिस करते हुए और इसकी मल्टीप्लिकेशन में 365 दिन जाना, एक किसी भी चीज को पारंगत करना, अपने जीवन में उतारना, उसके एक एक बारीकियों को समझते हुए, तो ये एक अद्भुत बात है। तो हम दोनों आज आप सबसे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो और एक आप सब नॉलेजेबल लोग हैं और आपको इस बारे में जो है उस नॉलेज से कहीं कोई कुछ छूट रहा हो, वो इस सेशन के बाद आपको कंप्लीटनेस महसूस हो। जी। असल में मृत्युंजय योगपीठ से जुड़ने से पहले मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं 108 सूर्य नमस्कार एक बारी भी कर पाऊंगी। जब असल में आपने टीचर से बोला था कि इनको 108 ही करवा दीजिएगा, तो फिर मैंने बाद में उनसे पीछे से पूछा एक दिन में, उन्होंने कहा हाँ। तो मैं सोच रही थी कि 108 सूर्य नमस्कार
तो मतलब मैं तो खुद ही नहीं सोच पा रही थी कि मैं खुद कर पाऊँगी। लेकिन वो तो आपकी कृपा है कि आपने मार्गदर्शन करा और आपके मार्गदर्शन पे चलते हुए मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि ये कितना लाभकारी है और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि जो लाभ मुझे हुआ है वो मैं बाँट सकूँ दूसरों को। तो ये एक अद्भुत जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अ, छुपा हुआ खज़ाना है, जो कि खुला पड़ा है और लोगों को जानने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है थोड़ा कि ये एक ऐसा खज़ाना है कि उनको स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, इससे इससे बड़ा ऊपर और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर हम कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, इसी शरीर के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, तो अगर शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो हम खुश हैं, हम उस जीवन को का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। तो सूर्य नमस्कार की इन्वोकेशन, सूर्य को प्रणाम करके, और हम आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और एक सूर्य नमस्कार इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसन को सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करने के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और एक हेड नेक स्पाइन जो है उसको आप वन लाइन में लेकर आइए। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और एकदम लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। With the next inhalation, we will chant Om 3 times. Om Guru Brahma Guru Vishnu Gurudevo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namah. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukmiva Bandhanan Mrityormukshi Amamrita. Om. Please join your hands together. Put your hands on the eyes, on the face, on the back, on the shoulders, on the arms, to the chest, to the thighs, to the back, through the thighs to the feet. And Hari Om. Gently open your eyes. सूर्य जो पूरी सृष्टि को प्रकाश देता है, सूर्य के बारे में हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, जो एंशिएंट वैदिक टाइम्स से सूर्य के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बताया गया है हमारे एंशिएंट सीकर्स, ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में जो इंफॉर्मेशन
शेयर करी गई वो ऋग्वेद से की गई। डायरेक्टली सूर्य नमस्कार के जो आसनों के बारे में कहीं पे कंप्लीट सीक्वेंसिंग नहीं है। जो स्टार्टिंग हुई वो स्टार्टिंग वर्शिप के माध्यम से हुई। फिर जो हठ योग की ट्रेडिशन स्टार्ट हुई तो नाथ परंपरा से, तो कुंडली अवेकनिंग और प्राण नाड़ी के बारे में शेयर करी गई। तो वहाँ पे भी सूर्य नमस्कार के डायरेक्ट सीक्वेंसिंग्स नहीं थी, परंतु जो सूर्य की वर्शिपिंग उस टाइम पे मतलब वैदिक काल में और चलते हुए ट्रेडिशनल सिस्टम्स में उसकी जो वर्शिपिंग के लिए सर्टन पोस्चर्स, प्रेयर्स और उनके सिस्टम्स को छोटे छोटे भागों में अलग अलग फिर उनकी कंपाइलेशंस हुई। तो मेनली जो कंपाइलेशंस फर्स्ट टाइम जो हुई वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुई। तो उसके बाद जो उस टाइम पे एक औंधा एक औंध एक जिला है, तो वहाँ के एक राजा हुआ करते थे पंत जी। तो उन्होंने इसको कंपाइल किया फर्स्ट टाइम। फिर जो आगे ट्रेडिशंस हुई पट्टा भाई जोस, कृष्णमाचार्य जी के और शिवानंद आश्रम के जो संस्थापक थे शिवानंद जी महाराज, जो ट्रेडिशनल शिवानंद या योगा स्टाइल के बारे में जो है उन्होंने एक सीक्वेंसेस दिए। तो अमूमन क्या हुआ कि उन सीक्वेंसेस में ये चीज़ बहुत थी कि हमें अम, अ, उन वर्शिप्स को, उन प्रेयर्स को, उन ब्रीदिंग सिस्टम्स को, उन आसनों को एक कंपाइलेशन करके एक ऐसा सीक्वेंस देना है जिसमें कि सूर्य के समान इस जीवन में उस एनर्जी का फ्लो, उस प्राण से ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियां हैं उनका एक बैलेंस क्रिएट हो और हमारे मन, मस्तिष्क और सोल का एक सिंक्रोनाइजेशन हो। यही डिफरेंस मॉडर्न और से वो वर्शिप बेस्ड, प्रेयर बेस्ड, डिवोशन बेस्ड, जिसमें कि ज्ञान, कर्म, भक्ति का योग के साथ में एक राजयोग की स्थापना करते हुए और उनके रेफरेंस के साथ एक उज्जवल जीवन को जीने की शैली जो बताई गई वो उसमें हो, उन चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया। तो शिवानंद जी ने आश्रम्स हैं आज भी उनको फॉलो करते हैं। जो सीक्वेंसेस थे वो 12 पोस्चर्स। तो ऐसा हुआ कि हर एक 12 पोस्चर के साथ में एक एक सूर्य की इन्वोकेशन का मंत्र भी एसोसिएट किया गया, जो आदित्य हृदय में और हठ योग, भगवत गीता में भी रेफरेंस है, पतंजलि योग सूत्र में भी रेफरेंस है। सूर्य नमस्कार के सीक्वेंसेस का कहीं रेफरेंसेस नहीं है, बट उसकी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं उनका रेफरेंस है। उनके जो बॉडी फिजिकल अलाइनिंग का जो रेफरेंसेस है, चक्रास का जो कुंडली अवेक इन्वोकेशंस जो हठ योग में बताए गए हैं उनके रेफरेंसेस, मूल बंद वगैरह 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 जितने भी बंद हैं उनकी प्रैक्टिसेस को अलाइंड करते हुए एक ऐसा सीक्वेंस क्रिएट किया गया है जो कि एक एनर्जी के फ्लो के साथ साथ एक उसको जीने की शैली में इन्वॉल्व करते हुए एक मेडिटेटिव सिस्टम, एक फ्लो, एक रिदम और एक अंडरस्टैंडिंग जो कि फिजिकली मसल अलाइनमेंट, एनाटॉमिकली उन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाने में वो एक हेल्दी माइंड बॉडी सोल जैसे कि मैंने बताया उसको सिंक्रोनाइज करने में हुआ।
तो इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई? बेसिकली हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। तो ये एक अद्भुत हमारे जो एक कल्चरल सिस्टम था, जो ऋग्वेद से चलते हुए सुन के एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को प्रैक्टिस करते हुए उसको अ, एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी को उसका ज्ञान शेयर कर किया और आगे बढ़ाया। इसी प्रकार जो है ये सिस्टम्स जो हैं 1500 से 1200 बिफोर क्राइस्ट, जो कि वैदिक इरा माना जाता है, वहाँ से चल के फिर क्लासिकल हठा योगा जैसे मैंने बताया, वहाँ पे भी स्टैंडर्डाइज्ड सूर्य नमस्कार का नहीं रहा। वहाँ पे एक स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग आसनों की थी, जिसमें कि वो मसल ट्रेनिंग, क्रियाएं, कुंडलिनी अवेकनिंग, उसके साथ नाथ परंपरा के साथ उन्होंने जोड़ के एक सीक्वेंसेस उन्होंने अलग आसनों की अंडरस्टैंडिंग को जनरेट किया। फिर मॉडर्न सूर्य नमस्कार की डेवलपमेंट जो थी वो यूजुअली 10 से 12 डायनामिक सीक्वेंसेस की डेवलप हुई, जिसमें कि सबसे पहले जो है हमारे को इसके बारे में एक रिटन जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वो महाराष्ट्र के एक राजा थे भवन राव, उन्होंने उस चीज़ को किया। और फिर मतलब इसका रेफरेंस आता है शिवानंद जी के स्कूल का, जिसमें कि 12 पोजीशंस मेनली हुई। देन उसका रेफरेंस मिलता है विन्यासा सूर्य नमस्कार, जो विन्यासा स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसको कि डेवलप किया गया विन्यासा ट्रेडिशंस के साथ। तो उसमें फ्लो ऑफ ब्रेथ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और उनके वेरिएशंस जो थे वो 10 से 14 के बीच में वेरी करता है। डिफरेंट डिफरेंट पीपल उसको मॉडिफाई करते हैं। तो मेनली क्लासिकल जो है वो डेवलपमेंट जो हुई, वो शिवनंद जी ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और उसको शेयर किया अपनी नॉलेज को। एंड फिर उसके बाद जो है मिड 20th सेंचुरी में 9 विन्यासा सीक्वेंसेस के साथ में अष्टांगा के पट्टा भाई जोश हुआ करते थे, कृष्णमाचार्य जी के शिष्य थे। उन्होंने उस चीज उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए अष्टांगा ए और अष्टांगा बी सीरीज जो सूर्य नमस्कार की हैं वो डेवलप करी। और अमूमन इनके जो रेफरेंसेस अगर हम बात करते हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस चीज़ में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कहाँ से कौन सी चीज़ उठी और वो आज की डेट में कहाँ से कैसे इवॉल्व हुई। ये बहुत तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे ख्याल से हाँ हम जी, लोग एक लंबा सेशन रखेंगे इस पे। इसके ये लिए मेरी एक बहुत अलग सेशन इच्छा है। रखेंगे ज़रूर। जी, जी, जी। तो फिर भी जैसे अवेकनिंग ऑफ प्राण बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूर्य जो है वो डायरेक्टली प्राण को अवेकन करता है। तो उसको देखते हुए हठ योग प्रदीपिका से जो रेफरेंस है 2.2 उसका, तो उसमें क्या था कि व्हेन द ब्रेथ मूव्स द माइंड मूव्स, चले वाते चले चित्ते, निश्चले निश्चलम भावेत, योगी योगी स्थान मूल ज्योति ततो वायुर निरोध्यते निरोध्यते। So when the breath moves, the mind moves. When the breath becomes still, the mind becomes still. तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सूर्य नमस्कार की सिंक्रोनाइजेशन किससे हुई? ब्रेथ और मूवमेंट के साथ। तो हठप ने इस चीज को सूर्य नमस्कार की जो सीक्वेंसेस है उसको प्रभावित किया। फिर हठ योग के 2.5 श्लोका में कि वेर नाड़ीज आर इम्प्योर, प्राणा कैनॉट एंटर द कंट्रोल चैनल, सेंट्रल चैनल। तो जब हमारे जीवन में जो हमारी नाड़ियां हैं ईड़ा और पिंगला, जब तक ये इम्प्योर हैं तो हमारे सिंक्रोनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। और ये प्रैक्टिस जो है सूर्य नमस्कार की
हेल्प करती है प्यूरिफिकेशन के लिए और उनके प्राणिक फ्लो के लिए, और प्रॉपर योगिक ब्रीदिंग जो है डिस्ट्रॉय करती है डिजीजेस को। तो अवेकनिंग ऑफ इनर फायर जो होता है वो उसके बारे में बताया गया श्लोक 2.76। इसी प्रकार जो इवॉल्विंग उसको प्रभावित हुआ, शिव संहिता से भी कुछ रेफरेंसेस लिए गए, जैसे कि उसमें शिव संहिता का 2.1 श्लोक जो है वो बॉडी एज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द कॉस्मोस, के शरीर जो है ब्रह्मांड संज्ञ के देहे यावंत संति शक्तया, ऑल पावर्स एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी, एंड अल्टीमेटली ये सपोर्ट करता है कि दी आउटर जो सूर्य है वो कॉरस्पॉन्ड करता है हमारे इनर स्पिरिचुअल सूर्य के साथ। जैसे जो बाहर ब्रह्मांड है वही अंदर है, जो अंदर ब्रह्मांड है वही बाहर है। और जो फिर एनर्जीज के बारे में जो रेफरेंसेस आए वो आए सोलर और ल्यूनर एनर्जी, चंद्र और सूर्य की जो एनर्जीज हैं। तो शिव संहिता में एक रेफरेंस है 3.6 और 3.7, जिसमें कि ईड़ा के बारे में लिखा गया, ईड़ा जो है वो ल्यूनर एनर्जी है, और पिंगला के बारे में लिखा गया कि पिंगला जो है वो सोलर एनर्जी है। तो सूर्य नमस्कार जो है वो स्टिमुलेट करता है पिंगला नाड़ी को और ईड़ा नाड़ी को, और डेवलप करता है एक तेज उत्पन्न करने के लिए, जो वाइटलिटी है उसको उत्पन्न करने के लिए। और चूंकि सूर्य नमस्कार प्योरिफिकेशन करता है, तो ग्रह जो रेफरेंस लिया गया वो लिया गया 1.9, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम, प्योरिफिकेशन, स्ट्रेंथ, स्टेडीनेस, करेज एंड लाइटनेस अराइज थ्रू सूर्य नमस्कार, थ्रू योगा। अल्टीमेटली ये जो रेफरेंसेस हैं, फिर एक पुस्तक है आदित्य हृदम, ये जो आदित्य हृदम आता है रामायण में, इसका रेफरेंस आता है युद्ध कांड में। उसमें लिखा है, जो मंत्र लिखा है, आदित्य हृदम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम या जया वहम जपे नित्यम अक्षयम परमम शिवम। The Aditya Hridayam is sacred destroyers negativity, grants victory, and bestows supreme auspiciousness. तो अल्टीमेटली जो रेफरेंसेस दिए गए, उन रेफरेंसेस के साथ हमारे जीवन में सूर्य नमस्कार की स्थापना हुई, जिसकी ऋग्वेद 1.50 और 1.50.10, the rays carry the all-knowing sun upward for all the world to see, which symbolizes illumination and universal consciousness. आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि सूर्य का हमारे जीवन में इतना प्रभाव है कि जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य की ही उपासना है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. We meditate upon the divine radiance of Savitra, sun consciousness. May it illumine our intellect. ये सबसे डीप वैदिक इंटरप्रिटेशन है फॉर सूर्य, द बेसिस ऑफ सोलर अवेकनिंग इनसाइड। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा टेक्स्ट फॉर्म में, जिससे आपको हेल्प होगी अंडरस्टैंडिंग कि सूर्य नमस्कार की क्या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ बेसिस हैं। सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च, the sun is the soul of all that moves and all that does not move.
ये चीज यजुर्वेद में 17.19 नंबर के श्लोक में दी गई है, which reflects directly that the spiritual essence behind Surya Namaskar. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि the modern Surya Namaskar sequence evolved as a dynamic yogic practice, but its spiritual roots arise from Vedic sun worships, pranic science, हठ योग की प्योरिफिकेशन सिस्टम्स और मेथड्स और एंशंट अंडरस्टैंडिंग जो सूर्य की उस टाइम पे जो लोगों ने उस चीज़ के बारे में जाना, सीखा और माना, उस चीज़ को इनर कॉन्शियसनेस को अवेकन करने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक बेसिस, एक फाउंडेशन है सूर्य नमस्कार का, जिसको हमारे जो सिद्ध जन थे, जो ज्ञानी जन थे, उन्होंने समझा और हमारे साथ शेयर किया। आज उसी सीक्वेंस में जो सूर्य नमस्कार के जो सीक्वेंसेस हैं, उसमें जो जो मंत्र इन्वोकेशंस हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जी, आज बहुत सारा ज्ञान हमें आपके माध्यम से सुनने को मिला, जो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। और मैंने सूर्य नमस्कार का जो संकल्प लिया था वो बस ऐसे ही ले लिया था, ये सोच के कि कुछ अपने लिए करना चाहिए। उस समय मेरे को इतना कुछ ज्ञान नहीं था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, तब थोड़ा-थोड़ा पता चला। जी, मैंने स्क्रीन शेयर किया आपके साथ। जी, तो इसमें आदित्य हृदम पुष्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपेन नित्यम अक्षयम परमम शिवम। तो ये जो मंत्र है सूर्य का, सूर्य को इन्वोक करने में, जी, तो जो 12 सीक्वेंसेस हैं उसमें सूर्य को प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहला मंत्र जो है ओम मित्राय नमः, तो जिसका मीनिंग है सैल्यूटेशंस टू द फ्रेंड ऑफ ऑल। फिर उसके बाद दूसरे आसन में आता है ओम रवे नमः, सैल्यूटेशंस टू द शाइनिंग वन। रवे का मतलब होता है जो शाइन करता है। ओम सूर्याय नमः, जो कि डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, सैल्यूटेशंस टू दैट हु इज द डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। ओम भानवे नमः, salutations to the one who illuminates. Om Khagaya Namah, salutation to the one moving in the sky. Om Pushne Namah, salutations to the nourisher. पूछने का मतलब होता है जो कि नरिश करता है हमें, हमारा जो सरवाइव करने के लिए हमें करता है। ओम हृण्य गर्भाय नमः, salutations to the golden cosmic womb. आठवां मंत्र है ओम मरित्य नमः, salutations to the Lord of Dawn rays. Om Adityaya Namah, salutations to the Son of Infinity. Om Savitre Namah, salutations to the stimulating power. Om Arkaya Namah, salutations to the Radiant One. Om Bhaskaraya Namah, Om salutations to the Giver of the Light. So it helps us in affirmation of each and every pose. It gives the inner consciousness the inclination why we are doing this. And with every invocation, with every mantra, there is resonance of the sound, and that resonance with the breath, the rhythm, it activates the inner channels with the balancing of Ida and Pingla, and accordingly the energy chakras get evoked.
I have So many this questions. we are always open to answer them all. One question, if you can take Uh-huh. now. Please, Uh, please, please. I asked someone to join yoga, and I got reply, because I'm Christian. I don't follow yoga. Uh, so I explained on my that yoga is not something is religious, but I want you to explain a little bit better, maybe. See, what is yoga? Yoga is an understanding. It is like understanding that you exist, the understanding of what is happening in our day to day life, the understanding of we are breathing, the understanding we are hungry, we eat, the understanding that the sound which is coming, we hear, the understanding that the light, what we is coming, we see, the understanding the vayu which is going around, we feel. So anybody who says that I am practicing a particular religion and I am not going to follow this yoga because it belongs to a particular religion. So it is important to understand that there is nothing to do with the religion. But yoga is something which helps any religion, any person who is practicing their own religion to understand their own religion much better because it illuminates their understanding of their consciousness. It helps how they can connect with themselves and it gives clarity within. If somebody has an energy and he doesn't know how to utilize that, that energy goes waste. So with the proper understanding of how to utilize this energy, how to understand how to enhance their vitality, so yoga helps anybody to live consciously. And the religion which all they practice, whether it is Christianity, Hinduism, Sikhism, Islam, the core essence is to live a conscious life. So yoga is not a religion, it is a way of life. Because when the mind is concentrated, when the body and mind is aligned, when the soul connects, there is inner and outer connection with the outside and inner side. So you become the master of yourself. And when you become master of yourself, you are free to make a choice whether to eat rasgulla or whether to eat uh, golgappe, bhelpuri, or whatever, anything. So this understanding, which helps that what to choose and what to not to choose, it is enhanced with the practice of yoga, which is right for you and what is not right for you. Particular naming it to a particular religion, because the rishis followed the Sanatan dharma is sarvadeva kutumbakam. So the follower of my thought and follower of not my thought is equally welcomed. So that is the foundation of yoga. Whether you are white, black, colored, non-colored, whatever, whether you are a male or female, whether you are a child or aged, if you want to align yourself, uplift yourself, your inner self for a happy, well
understanding of living a happy life. The yoga is the source to understand Christianity much better, what my friend might have practiced before. Um, it's my Question. privilege that you are sharing your wisdom with us, and uh, I'm with blessed. that, many can get benefited. I'm really blessed, and I'm eager to answer more questions. And it gives me a great opportunity to connect with myself and with my student, because without questions it sometimes doesn't give the purpose and reason of living this life. So it is very important to have questions: what we do, what we want, what we are sharing, what we want to be shared. It is very important because questions give the better understanding. Yeah. Before starting this challenge, I was I just made it easier because I heard a lot. Surya Namaskar is complete yogasan, which you can, if you are following that on regular basis, uh, you will overcome almost all the diseases like that. Mhm. I heard, and I made a easy package like for myself, which I can follow, and I'm doing practical still, and I'm also observing myself how it's going on my body and my life, uh, Mhm. and gradually I heard that yoga is a key trick to cut off or get rid of all the diseases. So that Mhm. was my big question. Uh, Maybe I heard some videos and I thought, is it really correct? Is it or he or that person is just faking? So that kind of but you addressed that question. And I also heard that you can gain weight with your with Surya Namaskar, and you can reduce weight as well. You see, as the Surya gives light to the plants, and plants do photosynthesis, they nourish, and the nourished body and the soul. Similarly, it is the light rays of Surya gives vitality to the human body and all the living beings of this earth. So, what is vitality? Basically, when the invocation of that ray, the light of Surya, happens, the body gets nourished. So, the dispelling of the darkness, dispelling of all the ailments, the balance of body, right hemisphere, left hemisphere, Ida in Pingala. So when it happens, the automatically the body's ailments or diseases gets decreasing. That darkness is flowing away in sweat, with breath, with the movement, the circulations properly having, the blockages of the body, the channelizing of the chakras, the energy sheets, the proper flow of the five sheets, the balancing of the inner agnis. So when the balance happens, the body gets so much relaxed. So relaxed mind and a relaxed body can give you more opening to newness, freshness. And as freshness happens, the body starts to attain what is not available, starts to absorb. So similarly, the soul. So all the positiveness
during all practices, such practices, the positiveness starts to radiate. So with this radiation, what happens that the body feels at home, body feels comfortable, mind and body is in balance, synchronized. So automatically the excess of weight is lost and less of weight is gained. So what is not appropriate for the body is automatically eliminated, and what is appropriate for the body, that nourishment from the food starts to happen, and body starts to, a thin person can, what is remaining can be added, and what is excess can be lost. So I will conclude with my that understanding. What I understand, the sun is the ultimate or only source of energy on the planet or in the universe, and we are we irrespective of religion, caste, class, we are great. We are grateful for that we are getting energy from sun, as I Ji. understand. So it has no connection with religion. It has no connection with the religion. It is more connection with the individual consciousness. Yes, that's a good understanding I got. So let's begin with the understanding of each sequence. I'll be sharing you the sequence of 12 Surya Namaskar. So here is the sequence for you. You understand the Surya Namaskar. So Can you zoom giving a, it little bit? है जी? Can you थोड़ा zoom कर सकते हैं? और थोड़ा आप zoom हो मुझे सकता है क्या? विंडो को थोड़ा विंडो को नैरो देवी हो जाए। एक सेकंड एक सेकंड जी होल्ड कीजिएगा मैं एक सेकंड विंडो को अगर थोड़ा नैरो कर सकते हो तो थोड़ा एक सेकंड जी अब आ रहा है जी जी परफेक्ट जी so the classical modern Surya Namaskar is sequenced in 12 steps. This is the traditional system which follows these 12 steps, and with this 12 steps the complete one circle happens. So Deepaji, why don't you start the sequences yes definitely that we are discussing, and yes you show each and every pose. yes So let's begin with samsthiti, normal pose. I believe you are not at the moment visible complete to the ground. Your mat is not visible. Just a second. technical team is working on it. I really appreciate the hard work of the technical team. yeah বলে দিলাম যে এক্ষুনি ভিডিও আসছে এক সেকেন্ড You are not visible. So there is number of positions are 12. This sequence was created by Swami Shivananji Maharaj, or the founder of Divine Life Society. He was the pioneer who introduced the yoga
authentic yoga to the whole world through his followers. They have literally enlightened the lives and showed the path of true understanding of sannyasa, true understanding of Raj Yoga, true understanding of Gyan Yoga, Bhakti Yoga, and the disciplines to be followed with true practice where it is properly uh, all around development, not only asana, not only breathing mastery, not only the physical aspect, but the spiritual aspect as well, and the balance between, and how to lead a life of devotion, dedication, and the life which is based on knowledge, the life which is based on Karam Yoga. So he is the true enlightener of Raj Yoga. So his contemporaries at that point of time, Swami Shivananji Maharaj, his contemporaries, Swami Vivekananda ji, Ramakrishna Paramahans, all these divine dignitaries have laid the foundation of modern yoga. So the first sequence goes with Pranam Asana, the prayer pose, the salutations to the sun. Om Mitraya Namah. So this salutation to the sun starts with the first mantra, and that is Om Mitraya Namah. And then from the Samskriti, please take your position. Uh, are you seeing the mat? The mat I- is no. It's okay. Ji. Ji. So the sequence of coming to Pranam Asana, stand tall, palms together at the heart center, center of the mind, activation of Anhat Chakra. And through this, exhale. And with the inhalation, raise your arms, lift arm overhead gently, arch back, open the chest, then Pada Hastasana, the third asana, hand to the foot. While exhaling, fold forward from the hips, relax head and neck. With the next asana sequence coming, inhale, take your left foot back, right foot back, left knee bent, lift chest, gaze up. Ashwasanchalanasana. From here, exhale, come to mountain pose, lift hips up, spine long, heels forward towards the floor, heels towards the floor, make it touch the ground. Absolutely correct. And retain your breath, come to Ashtang Namaskar. Knees, chest, and chin on the floor, hips lifted up. Retain your breath, and with the next, come into flow and lift your chest. Inhale to Cobra pose using back muscles, soft shoulders down, and then to Parvatasana. Lift your hips, spine long, heels towards the floor. Exhale, and then inhale Ashwasanchalanasana. Ra- Gaze up, and then exhale to Padhastasana. Fold forward from the hips, relax and head and neck, and then inhale, sweep arms up, gently arch back. And from here, Pranamasana. And this is one circle. And now we will repeat this sequence to create this balance. Again,
Inhale, Hastottanasana. And exhale, Padhastasana, hand to the foot. Fold forward from hips, relax head and neck. And then Ashwa Sanchalanasana from the left leg back. Left knee bent, lift chest, gaze up. And then coming from here, exhale, Parvatasana. Ashtanga Namaskar. Flow, retain your breath, knees, chest on the floor, hips lifted. And then from here, Bhujangasana, Cobra pose. Lift your chest using back muscles, elbows, shoulders down, and exhale. Come to Parvat Asana slowly. Lift your hips, spine long, heels towards the floor. Left leg forward. Come to Ashwa Sanchalanasana. Lift your chest, gaze up, and Padahastasana. Bring your right foot ahead and hand to foot. And from here, gently sweep arms up, arch your back, come to Hastanasana, and gently exhale, return to prayer pose. Observe your breath, feel the stillness, and we have completed one cycle. So, one important thing to keep in mind is when expansions are there, when backward bend is there. In all expansions, inhalation has to be there. And during all forward bends, like compressions, exhalations have to be there. And during the transitions, stability, breath retention has to be there. For example, breath retention has to be there during the time of Ashtanga Namaskar. Then flowing movements, rhythmic breath has to be there. Inhale, come to the flow. It should be like a pendulum. It should be like a flow. And as your practice enhances, you feel the depth, and it is so amazing, so energizing. It improves the flexibility, it gives the strength, and it enhances all the circulations of the body, channelizing, removing the blockages. It balances the chakras and it energizes the body. I believe we should have one more session on this, and during that, we can talk more in depth about Surya Namaskar. Definitely. I really congratulate you. You are doing so amazing, and I've seen that you have really developed, and with your practice, you are so much involved, and you have evolved. You're doing your movements with alignment and awareness. This is really amazing. And this is what it is to be focused on. I think I'm still learning day by day. Something is coming, and it's like we are learning lifetime, and it's my privilege. I got your guidance. Otherwise, I Pleasure, my pleasure. yeah It's the uh, Guru's blessings yeah. that is going ahead. So important is while practicing Surya Namaskar, at least for 30 minutes before, nothing should be eaten. It should be empty stomach. Move with the breath. Breath should not be stopped. It should be rhythmic. And above all, the body should not be strained. It should be flexible. It should be light. When you feel dizziness, try to change the pose or stop the practice and end the practice with gratitude.
The invocation invoke all the 12 Surya Namaskar mantras with each pose, and with this you can really, with the resonance of these mantras, your inner soul, your with the help of the breath, can really invoke that energy and vitality much faster. And the all the chakras associated with the energy channels, they get lighten up, released, the blockages are removed. So this life is so precious that it should be filled with gratitude, not with regret. It is very important that this mind is to be created a garden, not a dustbin. So, what all you are throwing in it, you should be more careful every time. And this sequencing helps you create a garden within. And the garden should be full of trees of fragrance. And that should be the way of your life. Wherever you go with the flow, and your flow flows with the fragrance. And that fragrance not only uplifts you, but your surroundings. And the most precious things what we can gift to people is that upliftment of thought, upliftment of energy, upliftment of something which can really help them getting better every day. And that should be the gift. And I believe Surya Namaskar is such a sequence. It uplifts you, and all those come in connection with you. And if they start practicing it, it is something amazing. Amazing. So, with these words, I hope uh, we can have one or two questions more, and then we close this session. Yeah. So, one of the common question is like who they have some knee problem or who can not do Surya Namaskar. See, basically, with the age, our joints start not moving. There is, because of excessive not activity and some injuries or some things, the body gets stiff, and stiffness creates to certain therapeutic disabilities or deformities. So, in such cases, it is very important that wherever there is a strain, it should be stopped there and then. And it should be, the asana practice should be done in such a way that it should not be troublesome. It should be rejuvenating and energizing, and it brings happiness. So, blood pressures, knee aches. So, doing slowly, and with the practice of 21 days, the muscles get toned up, the joints get into the flow, and with every day uh, there is a change at the chemical level, at the physical level, at the spiritual level. And initially, for 7 days, there can be a rejection from the body, that too much of aching, because a stationary body and the moving body. So nobody wants to move unless and until we need to push. That push has to come from within. So initially, 2 3 days can be a push, which is not so much motivated. But once after 7 days, if you make it a must that I have to do it, so where there is a will, there is a way. So automatically, it can help. And one must, doing any exercises, one must get himself or herself at least get a medical checkup done, and ask their particular physician then whether they are okay to do the practice, or whether.
And I believe yogasanas are such that anybody can do, provided moderately and according to their physical capacity. So for every person, there are modifications. So such modifications, when underwent under a trained uh, guide or a yoga practitioner, so automatically that that person who is suffering from certain ailment, and with the proper guidance and with proper teaching, with proper practicing under the proper supervision, one can feel much better, and their previous ailments can start minimizing. And it is really effective for the joints, arthritis, and once the mind gets stabilized, all the body starts to progress, because mind is the powerhouse from where the directions goes to each and every part of the body. And similarly, the negative signals from that part of the body goes to the mind accepts it, and then you are in the same situation. But when mind sends back a positive aspect, no, I'm going to give a change, I'm going to make an effort and remove this circumstance from my life. So immediately that positive signal counters that negative signal to that particular body part, cell, and ultimately there is a change started to happening which is positive. Another question followed by that. I Nowadays chair version is also very popular in uh, Surya Namaskar, related to Surya Namaskar. What's your views on it? What? I'm not able to hear properly. Can you please explain? Uh, Nowadays, uh, yeah, is it audible now? Now it is audible. Yeah, Please tell me. but my video is not coming proper. You, are, Can you get you, this chair? we see you very beautiful, and you are absolutely visible. So there is no problem. Okay. Jay. My question is, like, nowadays chair version of Surya Namaskar is getting very popular. What's your view on it? Chairperson of Surya Namaskar? Chair version. Chair version of Surya Namaskar. Yes. See, in the Iyengar yoga, that is absolutely, they have created sequences for therapeutical aspects. So modifications have happened. There is aerial yoga, there is chair yoga, there is laughing yoga, there is so many aspects. And the other not good version was the beer yoga. I heard that, and then there is hot yoga. So according to the personal inclination and choice, and whatever suits, there are modifications, and there are contraindications also. So the people who are associated with more than 12 hours of sitting, or more than 8 hours of sitting, they have sitting job. So it is quite helpful for them to introduce certain sitting postures, and while sitting on the chair and doing certain aspects, because tan asan, they make their lower stationary, and they raise their arms, they do that, but they are not able to do ashtanga. So ashtanga namaskar, I mean, there are so many variations, there are so many modifications, not in particular to, I mean, Surya Namaskar, we follow the traditional aspect, and we intend to keep the main purpose behind the traditional classical Surya Namaskar is keeping a normal person healthy and fit to face the challenges of life,
in a brave way like a lion, and keeping healthy in all different situations, because according to Bhagavad Gita, it is that one person, one self has to become a sthit pragya to attain that supreme knowledge. So keeping the body fit, so the therapeutical aspects are there, but majority the yoga is meant for keeping a person healthy by not letting him get diseased. With the practice of yoga, you keep yourself fit to face all the circumstances of life. The whole world was striving with COVID, and the yoga practitioners were doing their yoga and keeping themselves fit. So that is a big, big, big inspiration, as well as a challenge, that yes, we have to do it and we can do it. And every person, it is very important that choose which is tried and tested and which is best for them and which is traditional. So I mean, yes, there are so many modifications and variations according to the personal choice. The person can do it. Recently, I was that there is water yoga. They are doing yoga poses on the sea or on the water surface in the boats. I mean, to gain attraction or to gain the likes and dislikes on Facebook promotions, all this social media developments, but creativity is happening, it's good. So the main thing is like the breath is making us alive, it is yoga which is keeping us fit. Thank you very much. It's a great opportunity and privilege we got today to get uh, enlightened by your wisdom. And it's just starting. We are coming with more such sessions in future. So thank Absolutely. you very much. My So before closing, heartful let's gratitude. invoke and grateful to the Guru, and with the chant of Om three times, let's come to the culmination of this session. And the Guru, the Surya, spread this light our lives and keeps us illuminated, radiating, and fit and healthy to lead our life full of principle, discipline, and fruitfulness. Take a long deep breath in and exhale. With the next breath in, we will chant Om three times. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. May the divine be the constant companion. May the light guide us through our every day, every moment. May the wisdom blossom
and illuminate our lives with fragrance, spread happiness, trust, and well-being. Om. Gently open your eyes. Thank you so much, Deepaji. It's been a pleasure, and giving me this opportunity, connecting with you and all who are listening to this session. It's a privilege because the best what we can do is to share the right information and knowledge with all those who connect with us. Very much. And I don't have any words to express it. I'm so glad to hear from you. And Great. uh, next, we will come soon. Yes, absolutely, absolutely, absolutely. This is the service to the humanity, and we must do it. Right, great. Hari Om. Hari Om. Good night. Pranam. Good day. Good day. Namaste.